Hello, my dear students. Welcome to our YouTube channel. Others coaching to YouTube channel को तुम्हारा स्वागत. Dear student, today we are going to study a science chapter of your class 8. Class 8 रो गोटे science chapter discussion करिवा. Some important questions about your some natural phenomena. Science chapter standard 8. Some natural phenomena. Some important questions here we are going to discuss about some important questions. Question number 1. Question number 1. Why does ancient people fear of lightning, but we are not? First question. It is not so much hard. Ancient people fear भय करुले lightning, but we are not. Why? Because they have no idea about the lightning. Lightning विषय से किसी आइडिया नथिला. They are believing it is the it is the natural things are made by God. भगवान को द्वारा it is a God creating things. That's why they are afraid of. They are afraid of about the God. भगवान को से भय करते डरुले. तो लाइटनिंग भगवान को द्वारा गोटे नेचुरल थिंग्स भगवान को द्वारा तैयारी होता गोटे प्रकार अभिशाप. दो दे आर फियरिंग अबाउट द lightning. But now we are have some idea about the lightning. Lightning विषय में हमारा आइडिया आसी जाइए. That's why we are not afraid about the lightning. Similarly, question number 2. Explain the spark that the Greek knew about. Greek मानक आइडिया ए स्पार्किंग विषय कौन थिला. Greeks in ancient time also Greeks have some idea about the sparking. That means electrons sparking or bombardment. Electron are charged. Electrons are charged particles. Both charged particles when contact to each other, a lightning or spark is evolved. Now modern society, modern time, now we are believing it because just electric sparking in our home and in incidents when electron and electron bombard to each other, a lightning or spark is evolved. It was the question number 2. Similarly, question number 3. By an activity, show the same materials gain same charge by rubbing. We know that this question complete answer mentioned in your book. तो book रे ये question answer अच्छी. By an activity, show the some material. Same material को आमे जता बड़े गोटे rubbing करुचंती से same charge gain करुची. Just like your ball pen, your plastic comb, एको आमे dry hair रे तले comb करुचंती रब करुचंती ताले जेहेतु सेम मटेरियल सेम थिंग्स रे आमे रब करिबा ताले सेम चार्ज दे विल गेन और क्रिएट सेम चार्ज. सिमिलरली डिफरेंट मटेरियल्स नै कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट रे आमे जदी रबिंग करिबा दैट मीन्स डिफरेंट चार्ज विल बी प्रोड्यूस. Similarly, question number 4. By an activity, show that different object gain different charge. Here a different object, you will take a different object and rub it with just like your ebonite animal fur upre rub karo. Otherwise a discarded refill use होई साथिबा गोटे refill को तमे पॉलीथिन उपरे रब करिवो ताले different materials नै कि balloon. Similarly balloon नै कि पॉलीथिन उपरे और अदर मटेरियल ले रबिंग करिकि आमे डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट ऑब्जेक्ट सहित रब करिकि आमे डिफरेंट चार्ज पाई परिबा. ये एक्टिविटी तुम बुक रे भी अछि. ताले एक्टिविटी रे तमे शो करिवो मीन्स एक्टिविटी को ही तमे एडी एक्सप्लेन करिवो.
Next question number 5. By an activity, describe the structure and a function of electroscope. It is also a direct question from your book some natural phenomena जो तुम साइंस चैप्टर से चैप्टर रे एटा अछि by an activity describe the structure and a function of electroscope. Electroscope is a device. ये उठे device. By this device we are able to detect the charge material. Material लो चार्ज अच्छी ना नहीं आमे डिटेक्ट करिया ପାଇଁ ए इलेक्ट्रोस्कोप रो यूज करथांती. इलेक्ट्रोस्कोप रो स्ट्रक्चर यू विल फाइंड इन योर बुक. तुम बुक रे तुम इलेक्ट्रोस्कोप रो स्ट्रक्चर देख परिबो केमती इलेक्ट्रोस्कोप बना जाइछि. फास्ट गोटे एनी बीकर और प्लास्टिक जार नहीं परिबो. जार रो माउथ को तुम गोटे कार्डबोर्ड नहीं कि कार्डबोर्ड टिके लार्जर साइज नब. कार्डबोर्ड रे गोटे होल करिवो. होल करिकी गोटे पेपर क्लिप को कार्डबोर्ड रे परपेंडिकुलरली हैंग करेबो. आउ से पेपर क्लिप रे यू विल टेक बाय द हेल्प ऑफ ए हुक साथ रे यू विल टेक टू थिन aluminum paper strips नब. aluminum strips, very thin aluminum paper. then any materials को रबिंग करी तमे चार्ज करिवो. चार्ज कर साल पर you will touch it with your paper clip से तब टच करेबो. then you will see the strips, aluminum strips will displace टिके डिस्प्लेस हो तांको डिस्टेंस जो aluminum जो strips hang होइथिबो perpendicularly they will repel each other because when we rub any material this material get charged. material को metal rub कले से चार्ज हो गला. आउ पेपर क्लिप बाय द हेल्प ऑफ पेपर क्लिप चार्ज aluminum strip जोटा नहीं थेलो aluminum foil को पड़ेला. आउ सेम चार्ज जतबले two objects gain same charge they repel each other. Similarly different charge attract each other. Positive repel karibo. Negative also repel each other. Positive negative or negative positive attract each other. In this way we will able to do the activity and describe the structure and the function of electroscope. It is a very important question in this chapter. Some natural phenomena is a very important chapter. Then question number 6. What is अर्थिंग कौन. अर्थिंग आमे कहीं करती ना अर्थिंग करिवार मतलब आमर होची अर्थिंग इज ए गोटे कहवा गले अर्थिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी डिस्प्लेस द चार्ज बाय थ्रो ए कंडक्टर थ्रो रे तमे चार्ज को डिस्प्लेस करिवो ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज वेरी ह्यूज. बहुत विराटमय अर्थ. इट कंडक्ट सो मच इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी इफेक्ट और चार्जिंग. अर्थ चार्ज न होगी बहुत सारा इलेक्ट को कंडक्ट कर पारिबो और ऑब्जर्व कर नबो. तेणु आर्थिक प्रोसेस रे एनी ऑब्जेक्ट मेटेरियल इवन आमर इलेक्ट्रिकल जो गैजेट में यूज करछंती इन आवर हाउस एंड इवन the total system and wiring of our house एको any sparking रू any जहाँ को हमें डिस्चार्ज कौचे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और शॉर्ट सर्किट रू आमर इलेक्ट्रिकल गैजेट को आम कंप्लीटली वायरिंग जोटा वायरिंग है आम घर ताकू सेफ्टी करने अर्थिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी ट्रांसफर द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम गैजेट और सर्किट टू अर्थ को आम चार्ज डिस्चार्ज करिपरिबा. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग द स्टोरी. इट इज ए डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर लेसन लाइटनिंग द कंप्लीट स्टोरी अच्छी. लाइटनिंग केमिति होची जेतेबेले एट द टाइम ऑफ रेन टाइम रे कौन हुए ना द क्लाउड्स अपर क्लाउड्स
लोअर क्लाउड्स ता भीतर गोटे गैप थाए अपर क्लाउड लोअर क्लाउड जेतेबेले द क्लाउड व्हेन cloud is formation due to the water vapor moisture जाको आम कहूचे वाटर वेपराइज है कि ऊपर को जाऊँ वाटर वेपर एंड एयर पार्टिकल्स एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स स्मोक ऑल्सो combination of water vapor or water particles smoke air dust particles made of make क्लाउड फॉर्मेशन होता है से क्लाउड कंडेंस हेले क्लाउड टिके हेवियर हो जाए तो हेवियर हेले ही से ड्यू टू आवर अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेविटी दे comes toward downward towards earth the cloud which become heavier जो cloud heavier हो जाए attract towards ground ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ही ताको ग्राउंड आड़ को अट्राक्ट करुच्ची आउ लाइटर क्लाउड्स कंपैरेटिवली जो क्लाउड गुड़ा लाइटर अच्छा दे आर गोज अप ऊपर क्लाउड आउ तल क्लाउड द चार्ज डिफरेंस आसी जाए हेवियर कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड लाइटर नेगेटिव चार्ज सिमिलरली ग्राउंड एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज हिसाब से ग्राउंड ही एक्ट करे आउ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन ही लाइटनिंग कज बने ताले लाइटनिंग ड्यू टू बॉम्बार्डमेंट ऑफ क्लाउड्स और अट्रैक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिस्चार्ज और bombardment of charged particles very huge that is so much power or light is evolved due to lightning. In this way you will explain to story of lightning. Now another question number 8 explain lightning safety it is a completely lightning safety जहाँ सब तुम बुक रे देछि डिटेल्स से देखिबो लाइटनिंग बेले तमे कौन करिबो टू टाइप्स ऑफ सेफ्टी हियर वन इज योर इनसाइड योर हाउस घर भितर एनादर आउटसाइड घर भितर लाइटनिंग बेले कौन करिबो आ आउटसाइड एथिले कौन करिबो आउटसाइड यू शुड नॉट चूज द टॉल ट्री केबे तमे चूज करिबोनी सिमिलरली कौन सी मेटालिक ऑब्जेक्ट पाखरे केबे भी शेड फेड जो गुड़ा सब बनी थी यूजिंग बाय मेटल्स यू शुड नॉट टेक शेल्टर और इट इज नॉट सेफ फॉर यू सिमिलरली ओपन ग्राउंड इज सेफ्टी प्लेस अदरवाइज अंडर ए ह्यूज ट्री गोटे गछ तले आश्रय नवा अपेक्षा ओपन ग्राउंड सेफ्टी रहिबो सिमिलरली लाइटनिंग बेले इनसाइड योर हाउस यू शुड नॉट यूज एनी इलेक्ट्रिकल गैजेट किसी यूज करवा ना इवन ए रनिंग वाटर और टैप और बाथरूम स्पेशली और सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ मेटल यू शुड कीप डिस्टेंस फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट्स से ऑब्जेक्ट गुड़ा ठारू आम टे डिस्टेंस मेंटेन करवा दोज आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज metals are good conductor and they attract the lightning means a spark of light a charge bombard ro lightning होची a heavy charge तेणु चार्ज कंडक्ट करुवा ऑब्जेक्ट ठारू आम डिस्टेंस मेंटेन करवा यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन बाय हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक रे हेल्प नहीं कि क्लियर कट जिनस गुड़ा वन आफ्टर एनादर तुम ताकू लिस्ट कर पारिबो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन लाइटनिंग सेफ्टी you should write your answer. Next question, what we can do and do not during thunderstorm is a huge or a massive but a huge charge or spread it होता है because very vast is our atmosphere is very vast similarly the cloud is very vast also earth क्लाउड एंक भितर जो अट्रैक्शन एंड क्लाउड बॉम्बार्डमेंट रु लाइटनिंग फॉर्मेशन होची इट इज
चार्ज जो डिस्चार्ज जो होची चार्जिव पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव बम्बार्ड रु लाइटनिंग फॉर्मेशन होती ताले एठी गोटे ह्यूज चार्ज फॉर्मेशन होची तेणु वी शुड टेक केयर सो मच बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस फॉर अस बहुत डेंजरियस कहीं लाइटनिंग बेले गोटे जिते टॉल ट्री लाइटनिंग से डेंजर सिमिलरली बिल्डिंग जिते टॉल बिल्डिंग लाइटनिंग इफेक्ट से अधिका दैट मीन्स it is a question for us what we can do or we do not during thunderstorm. If we are inside our house, ମୁଁ तुमको या पूर्व जस्ट डिस्कसन कर सारे इनसाइड घर भितर थे आम मेटालिक ऑब्जेक्ट टे दूरे रहा इफ वी आर इन बाथरूम वी शुड नॉट बाथ एट दैट टाइम से टाइम आम के गाधेबा ना कि पंड फंड जदि बाहर आउटसाइड अच्छा पानी भितर inside your water is not a safety for you. Similarly, tall tree outside the house, घर बाहर जदि थी tall tree or any shading place with the use of metallic roof थी और metallic beam थी और electric pole or tall tree ये सब safety place नुहे तेणु this question will write according to your book अनुसार तुम तार आंसर भल भाव लिखिपर बुक रे मेंशन अच्छी व्हाट वी शुड डू और व्हाट वी डू एंड डू नॉट सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज लाइटनिंग कंडक्टर इट इज ए सेफ्टी डिवाइस फॉर यू लाइटनिंग कंडक्टर इज ए सेफ्टी डिवाइस फॉर आवर हाउस नाउ कंस्ट्रक्शन टाइम रे ही गोटे लाइटनिंग सेफ्टी जिनस को आम इट इज ए डिवाइस रूफ्र टॉप रे फ्यू मीटर्स एभव द रूफ किछि रूफ रु किछि ऊपर को आम गोटे कंडक्टर यूज कर एटमोस्फियर जो चार्ज को दिस कंडक्टर विल अट्रैक्ट एंड बाय द हेल्प ऑफ ए थिन कॉपर वेयर इट दिस चार्ज गोज टुवर्ड्स द अर्थ मुझे या पूर्व जस्ट आर्थिंग तुम कही अर्थ कैन ऑब्जर्व ए ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज गोटे ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज को आम अर्थ को दे पारिबा आ अर्थ कैन ऑब्जर्व इट अर्थ कैन ऑब्जर्व ए ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज दैट मीन्स लाइटनिंग जो बेले एटमोस्फियर जो चार्ज स्प्रेड होची आवर लाइटनिंग कंडक्टर जो अच्छी इट विल कंडक्ट दिस चार्ज एंड पास थ्रू टुवर्ड्स अर्थ को पास करिपारिबो आमर आर्थिंग सहित ये लाइटनिंग कंडक्टर को आम कनेक्ट करिपारिबा जा फल आम बिल्डिंगटा इफेक्ट आसबनी बाय लाइटनिंग इट इज ए डिवाइस टू हेल्प सेव आवर हाउस फ्रॉम लाइटनिंग रो आम हाउस को ये सेव रखिपारिबो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 how can earthquake occur? Earthquake, it is also a natural phenomena, natural things. Earthquake is shaking or vibration of our earth, ground or our crust ro or earth ro जो shaking or vibration is called earthquake. ये vibration cause तुम बुक रे बहुत भल भाव देछि मु टिके डिस्कशन करूछि इट इज ड्यू टू द movement of tectonic plates. Our entire earth is not a single plate, it is divided different plates divide करछि हमर entire earth को से different plates are not unstable, they are moving slowly move होउचंती at the time of movement if they collide or strike each other this time strike or collision due to collision or striking the vibration occur this vibration is called our earthquake is shaking or vibrating or shaking earth is called earthquake question number 13 what is question number 13 what is seismic zone of or fault zone the
earthquake, the entire world actually is not seismic. Seismic zone means the place where earthquake is most happen to ଆମେ କହିପାରିବାନି. It is under the earthquake frozen area. earthquake ର just ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି. ଦ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ସର ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଛି, ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି ପ୍ଲେଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଭେରି ଡେଞ୍ଜର ଫର୍ earthquake. earthquake ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା ସେତେ ଡେଞ୍ଜର ନୁହେଁ. ବଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଯେଉଁ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ସର ଏଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ସବୁ ଆସୁଛି, ଦିଜ୍ ଏରିଆ ଆର୍ very earthquake pointed area or this area earthquake prone area. সেই এরিয়ারে earthquake ଏବେ ନ ହେଇଛି କେବେ ତ ହେବ. These regions, the regions where earthquake, we may not call it must happen, but maybe earthquake happen in this area are called seismic zone or fault zone. Next question number 14. What is Richter scale? Richter scale, it is a device or unit by which we measure the strength or earthquake रो जो power, earthquake जब भी happen हुए ताले रिचर स्केल हेल्प रे ही से earthquake रो strength को मेजर करा जाए. रिचर स्केल just like your earthquake 4.5 7 रिचर स्केल रो जो मेजरमेंट रु earthquake रो स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करा जाए. जे earthquake रो स्ट्रेंथ केते थिला आउ just we are thinking or according to your scientist, earthquake more than 6 रिचर स्केल रो 6 यूनिट रु more earthquake is very dangerous for us. Less than 6 means 4.5 is not so much danger because vibration ଯେତେ ଅଧିକା ରହିବ destruction ସେତେ heavy ହେବ ଆଉ destructive ହେବ ସେତେ earthquake. ତାହେଲେ Richter scale is an instrument by which we measure the strength of earthquake. earthquake ର strength को we can measure କରିପାରିବା. It was the next. What is quake safety rule? earthquake safety rule, it is a direct question for you. book रे अछि earthquake safety rule. हेले inside house outside house आमे कौन करि परिबा. just like your lightning, earthquake is a natural phenomena. Au when and where earthquake will be held, we are not sure about it. Science सेते डेभलप एबे करिनी जे कि earthquake रो fault zone तो डिसाइड हे जाछि. earthquake seismic zone जोड़ा earthquake prone area आमे कहि परिबा से एरिया रे earthquake आजि न होछि तो केबे हबो. किंतु जस्ट मोमेंट को डिस्क्राइब करिया पई साइंस सेते डेभलप हे नाही. earthquake केबे आ केउंठी हबो नॉट श्योर. साइंस इज नॉट श्योर, बट सेफ्टी रूल्स और सेफ्टी measures are very essential for earthquake. earthquake by safety, if you are inside your house, you should take shelter under your table and make a distance from your wall or some materials hanging in wall रे किसी जिनस जदि just like your book shelf or shelf जदि किसी walls रे अछि, you should make distance from this. And if you are inside your home, you should take shelter under your table. Similarly, a huge tree open area रे तमे अछ, outside your house a huge tree under a huge tree is not safety area. If you are in a ground, you should not lie down. तमे ground रे सोई पड़िबाटा ठीक हबनी. Otherwise you will sit down. Just put your head between your knee
and cover your head with your hands. It is the safety measure for earthquake. Next question, question number 16. What can you do at the time of earthquake at your home? ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିସାରିଲିଣି ତୁମକୁ, ଆନ୍ସର୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିସାରିଛି. ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17. What can you do at the time of earthquake at outside your home? यार आंसर भी ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି. In this way, there are 17 questions in this chapter. Some natural phenomena, 17 chapters. এই question ଗୁଡ଼ାକୁ very important for your exam. Try to note these answer in your notebook and practice it for your exam. It was the discussion about your some natural phenomena chapter for your exam. ଭାବୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ଡିସ୍କସନ୍ ଖୁବ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ. ଅଦରୱାଇଜ୍ ତମେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ. ୟା ପରେ in this way we will discuss other chapters also. It is the last of this class. Thank you. सबको बंद करो.